এটা জাতি তৈয়াৰ কৰা এটা আদৰ্শ আৰু এটা ভাষাক গতি দিয়াৰ এটা আদৰ্শ। পৃথিৱীৰ ভিতৰত মই অধ্যয়ন কৰাত এই নেপালী ভাষালৈ যিকোনো ভকেবুলাৰী অতি বেছি আছে, কোনো ভাষাতে ইমান ভকেবুলাৰী নাই। গতিকে মই মোৰ বন্ধুসকলৰ লগত যেতিয়া আমি কথা পাতোঁ, মই মোৰ বন্ধু নেপালী যদি হয় মই তেওঁক এই গোৰ্খা সংস্কৃতি বা নেপালী সংস্কৃতিৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ কওঁ। মই কৈছোঁ যে গোৰ্খা সংস্কৃতিৰ তুলনাত অসমীয়া সংস্কৃতি অতি ক্ষুদ্ৰ হয়, অসমীয়া ভাষাৰ ভকেবুলাৰী কম আছে, অসমীয়া অভিধান অতি কম, অসমীয়া ৰামায়ণখন অতি কম, তাত ভকেবুলাৰী কম আছে। কিন্তু নেপালী ভাষাৰ যিটো ভকেবুলাৰী, যিটো কোৱা হয় শব্দ ভাণ্ডাৰ, বহুত বেছি। ইয়াত অধিকতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশিষ্টলৈকে আহে। অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ধৰণৰ কথা আছে যিখিনি আমি অনুভৱ কৰা দৰকাৰ। আমি এতিয়া গৰু পোৱালি, ছাগলী পোৱালি সকলোকে আমি পোৱালি বুলিয়ে কওঁ, কিন্তু নেপালী ভাষাত প্ৰত্যেকটো পোৱালিৰ বাবে বেলেগ বেলেগ নাম আছে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি হ'ল, এই কথাখিনি আমি চাই পেলাই অনুভৱ কৰিব লাগিব। আৰু মই দাৰ্জিলিঙত যথেষ্ট দিন আছিলোঁ, দাৰ্জিলিং কালিম্পং আজি জেগাত মই যথেষ্ট দিন আছিলোঁ। তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে তাৰ আগলৈকে অসমৰ ভিতৰত থকা যিখিনি মানুহ আছে, আমি অসমৰ আমাৰ যেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আমাৰ অসমৰ কাষতে পাৰ হৈ যাওঁতে আমাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে এইখন আমাৰে নদী এখন পাৰ হৈ গৈছে, বুৰৈ নদীখন পাৰ হৈ গৈছে, সৰু নদী। কিন্তু এই নদীখন ক'ৰ পৰা আহিছে, কিমান দূৰৰ পৰা আহিছে, কিমান লেংথ আছে, তাৰ কিমান গ্ৰেভিটি আছে, এই গোটেই বস্তুটো চাবলৈ নদীখন অলপ আগুৱাই যাব লাগিব। নেপালী সংস্কৃতিৰ কথা আমি চাবলৈ গ'লে তেনেকৈ আমি গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি চাব লাগিব। আৰু নেপালীসকল যিটো গোৰ্খা অসমৰ খিলঞ্জীয়া হয়, কেনেকৈ হয়, আমাৰ ক্ৰীড়াত যিটো বংশ আছে, খচ বুলি ক'লে যিটো বুজা যায়, এই গোটেই জাতিৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক অসমীয়া জাতিৰ মাজতো আছে। আমাৰ ভগদত্ত বা বানপুৰ এনেকুৱা যিবিলাক আছে, আমাৰ যিমান মানে ঐতিহাসিক মৈদানৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ইতিহাস হয়, 4000 পুৰণা ইতিহাস হয়, 4000 বছৰ পুৰণা ইতিহাস আমাৰ অসমৰ। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিয়া বাৰু আমাৰ ইয়াত হিৰিম্বাক বিয়া পাতিছে, ভগৱানৰ মাক চিত্ৰাংগদাক বিয়া পাতিছে, অৰ্জুনে কৃষ্ণই আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত ৰুক্মিণীক বিয়া পাতিছে, কৃষ্ণই আহি ৰুক্মিণীক বিয়া পাতিছে, উষাই অনিৰুদ্ধ তেওঁলোকৰ বিবাহ বংশ কৰিছে। নেপালৰ সীতাক বিয়া পাতিছে ৰামে, তেওঁ সীতা মৈথিলী হয়, তাৰ হয় বুদ্ধদেৱৰ সম্পূৰ্ণ গোটেই বস্তুখিনি তাত সেইখন জেগাৰে হয়। গতিকে লুম্বিনী, এই গোটেই কথাখিনি বুদ্ধ ধৰ্মৰ লগত সম্পৰ্ক কেনেকৈ আছে, বুদ্ধ ধৰ্মৰ লগত ৰামায়ণৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ আছে, এইখিনি অধ্যয়নৰ বিষয় হয়। আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি ইয়াত আছে তেওঁলোকক আমি ক'ম আপোনালোকে ৰামায়ণ অধ্যয়ন কৰক, ৰামায়ণক নতুনকৈ চোৱাৰ কথা ভাবক। আৰু ৰামায়ণ এখন সাধাৰণ ধৰ্মগ্ৰন্থ নহয়, এই ৰামায়ণখন এখন সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক বান্ধিব পৰা এখনেই মাত্ৰ কিতাপ আছে रामायण। अरूप शर्मा गुनाबारी गाउँ विश्वनाथबाट मेरो कविताको शीर्षक छ नवचेतना। यो शार्दूल विकृत छन्दमा सिर्जना गरेको छु। छातीमा उसले विशाल गतिको आवाज बोकेर लो, गर्दैछौ नहुने कुकर्म किन हो आभार देखेर लो। हावाको गतियो सकिन्न नगरौ सन्त्रास फैलाउन, बोकेको छ यहाँ समाज यसले विश्वास मौलाउन। विश्वासी जनको विशाल मनमा आधार विश्वासमा, सोचेको हुनुपर्छ जसले पीडा छ सन्त्रासमा। पीडामा पनि बाँच्नुपर्छ जहिले खप्दैछ प्रहारको, चोटे चोट खपेर आज सहजै मुस्कान छर्दै रह्यो। धरती यो हरियो महान छ यहाँ मासेर जाने कहाँ, कहिले चिर्न सकिन्छ जगरलो भागेर जाने कहाँ। काटी जंगल वृक्ष लाजन भई, काटी जंगल वृक्ष लाजन भई, रोक्दैन कहिले पनि बच्ने आस सबै हराउँछ भनी सोच्दैन कहिले पनि। कस्तो निष्ठुर जात मानव बने
हाँसेर जाने कहाँ मात्रै आश्रयो छत्रास कसरी हाँसेर जाने कहाँ मान्छेको सिर्जना नसम्झ दुनियाँ होइन कसैको धरा हाँगा काट्न नखोज हेर सजिलै काटिन्छ आफ्नै जरा हाँगा काट्न नखोज हेर सजिलै काटिन्छ आफ्नै जरा आफ्नो धुन नदेखि आज सजिलो मानेर जानेहरू दोस्रो पल्ट नसोच फेरि सुविधा मिल्नेछ फिर्ताहरू अर्का केही असकीर्तिमा खुस भए बिग्रेछ आफ्नो गति कोही हुन्न सधैँ सघाउने कुरो आफै बुझे भो बरु हामीले अब यो गरेर झगडा तोडिन्न यो बन्धन सोच्नै पर्छ सधैँ नै आज सहजै गर्दैछौ मन्थना सोच्नै पर्छ सधैँ नै आज सहजै गर्दैछौ मन्थना। धन्यवाद। त्यसको पछिमा एकातिर दुध राख्नुहोस् अर्कोतिर शराब राख्नुहोस् एकातिर दुध राख्नुहोस् अर्कोतिर शराब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस् एकातिर दुध राख्नुहोस् अर्कोतिर शराब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस्। मान्यवर यहाँ हजार मान्छे भेटिन्छन् यो बजार हो। मान्यवर यहाँ हजार मान्छे भेटिन्छन् यो बजार हो। मान्यवर यहाँ हजार मान्छे भेटिन्छन् यो बजार हो। असल मान्छे चिन्हहरू बजारभरि किताब राख्नुहोस्। मान्यवर यहाँ हजार मान्छे भेटिन्छन् यो बजार हो। असल मान्छे चिन्हहरू बजारभरि किताब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस्। एकातिर दुध राख्नुहोस् अर्कोतिर शराब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस्। गधाहरू गाई बनिएको देख्दा प्रश्न नगर्नुहोस् तपाईँ। गधाहरू गाई बनिएको देख्दा प्रश्न नगर्नुहोस् तपाईँ। गधाहरू गाई बनिएको देख्दा प्रश्न नगर्नुहोस् तपाईँ। बरु आफ्नै अनुहारमा गधाको नकाब राख्नुहोस्। गधाहरू गाई बनिएको देख्दा प्रश्न नगर्नुहोस् तपाईँ। बरु आफ्नै अनुहारमा गधाको नकाब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस्। एकातिर दुध राख्नुहोस् अर्कोतिर शराब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस्। स्यालहरू आफै विद्वान बनेको जमात हो। यो जमात स्यालहरू आफै विद्वान बनेको जमात हो। लक्ष्मणजी स्यालहरू आफै विद्वान बनेको जमात हो। उसलाई उसकै परिसरभित्रको जवाब राख्नुहोस्। स्यालहरू आफै विद्वान बनेको जमात हो। उसलाई उसकै परिसरभित्रको जवाब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस्। एकातिर दुध राख्नुहोस् अर्कोतिर शराब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस्। अन्तिम सबै सरकार अनिकालका गोला सबै सरकार अनिकालका गोला हात लगाउनु। सबै सरकार अनिकालका गोला हुन् हात लगाउनु। सबै सरकार अनिकालका गोला हुन् हात लगाउनु। बरु घुँडा टेक्नुहोस् अनि पाउमा गुलाब राख्नुहोस्। सबै सरकार अनिकालका गोला हुन् हात लगाउनु। बरु घुँडा टेक्नुहोस् अनि पाउमा गुलाब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब राख्नुहोस्। एकातिर दुध राख्नुहोस् अर्कोतिर शराब राख्नुहोस् कुन चिज कति बिक्छ त्यसको हिसाब। छरपष्ट पारेर जनता बिथोल्ने गाँठ छ यहाँ लुटेहरूलाई दबाउने ठुलो आवाज छ यहाँ। छरपष्ट पारेर जनता बिथोल्ने गाँठ छ यहाँ लुटेहरूलाई दबाउने ठुलो आवाज छ यहाँ। इमान बेच्नेहरूको राज चल्दैछ त्यसैले हजुर। इमान बेच्नेहरूको राज चल्दैछ त्यसैले हजुर। नचल्ने पैसाहरू पनि चल्ने समाज छ यहाँ। म एउटा बाल कविता हजुरसँग शीर्षक छ फलफुल। बिरालाको म्याउ म्याउ खान मिठो स्याउ केरा कति कमलो छ छिटो गरी ल्याऊ। कुकुरको भौ भौ नानी सुन लौ अनर पनि झनै मिठो आप उस्तै हौ। बाख्रो गर्छ म्या म्या खेदाउनलाई छ
कटहरको भुँडी फुटाइ खान मिठो क्या बयर अमक खाने पनि लाउन पर्छ बानी बाबामाले सुन नानी गर्दैनन् है हानी दुवा दुवा गर्छ गाई नानी यता आइ शरीर यो तिखो पार फल फुल खाइ शरीर यो तिखो पार फल फुल खाइ। धन्यवाद। एकजना कविले पहिलो रामायण पण्डित भन्नाले बहु समाजमा मात्रै रामायणको कुराहरू रामायणको कथाहरू गाइने अर्थात् पढिने गरिन्थ्यो। तर भानुभक्त आचार्यले रामायणलाई बाहुनको घरमा मात्रै सीमित नराखेर नेपालीका सबै उच्च नीच केही जाति नभनिकन सानो ठुलो गरिब धनी केही नभनिकन सबैका समुच्च पुर्याए। सबैका ओठमा रामायण गुन्जिन थाल्यो, रामायण गाउन थाले र यस्ता महान विभूति आदि कवि भानुभक्तलाई आज भानुभक्तबारे आज केही दुई शब्द म भन्न पाउँदा आफूलाई अति नै भाग्यशाली सम्झिन्छु। हुनसक्छ मैले मेरो प्रयासमा धेरै त्रुटिहरू गरेको बढु शिक्षा यो बढु शिक्षामा के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटै आदर्श बुहारीको हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा बताइएको छ। एउटै नारीलाई पतिव्रता हुन उपदेश दिइएको छ। उपदेशमूलक कुराहरूले नि भरिएर मूलत नारीहरू प्रति लेखिएको यो बढु शिक्षा उनको एउटा उत्कृष्ट रचना हो। त्यस्तै अर्को रचना उनको प्रश्नोत्तर माला। साहित्य जगतमा प्रौढ हुँदै जाँदा उनका सृष्टिहरूको पनि प्रौढता र मान्छेको सोचहरू कस्तो हुन्छ भने लेखकको पनि समय र युग भन्छन्। समय अनि स्थिति अथवा युग यी सबैको सापेक्षमा लेख्दै जाने गर्छन्। कुन कुराको कतिखेर प्रयोजन हुन्छ त्यही अनुଯାयी लेखहरू लेख्दै जाइन्छन्। उहाँले पछि प्रश्नोत्तर माला लेख्नुहुन्छ। प्रश्नोत्तर माला असला मौलिक कृति नभएर अनुलित कृति होला। तिम्रो ऋण तिर्न त तर प्रयास गर्नेछु तिम्रो बलिदानको सम्मान राख्न त मात्र बिन्ती छ। फुलसरी हाँसिराख्नु तिमी मेरो मुस्कानको जिम्मा राख्ने मेरी प्यारी आमा तिमी मेरो मुस्कानको जिम्मा राख्ने मेरी प्यारी आमा तिमी। धन्यवाद। बसिले होस् या काम गर्दाको रुचिले होस् ठुलो गुण लगायौ तिमीले हाम्रो गोत्र भाषालाई भर्खिलो तलमा पुर्यायौ। तिम्रो मर्मस्पर्शी सृष्टिले आदि कवि कहलायो। तिम्रो मर्मस्पर्शी सृष्टिले आदि कवि कहलायो। हरेक गाउँको विधामा उहाँको कविता पनि सरल छ र हेमन्त भट्टराई विशेष गरी उहाँ शिशु कविता लेख्नुहुन्छ र उहाँले जन्तु जनावरदेखि लिएर आचार व्यवहारप्रति सचेत रहने नानीहरूलाई त्यो कवितामा शिक्षा दिनुभएको छ र नीति शिक्षाको पाठ उहाँले नानीहरूलाई त्यस कविता मार्फत दिन प्रयास गर्नुभएको छ र कविता शिशु कविता सुन्दर भएको छ। र त्यसरी नै रामप्रसाद दाहाल उहाँ असंख्य चर्चित गजलकार हुनुहुन्छ र उहाँका गजल यति सुन्दर हुन्छ र रामप्रसाद दाहालका गजल असमदेखि बाहिर पनि प्रशंसा गर्ने सक्षम भएका छन् रामप्रसाद दाहालका गजलहरू। र उहाँको गजलमा मानिसको जुन चाहिँ मानसिकता हो त्यो छर्लङ्ग देखा परेको छ र गजलमा आजको जुन चाहिँ मान्छेको यथार्थ हो समाजको यथार्थ हो त्यो गजलमा व्यक्त गरिएको छ र गजल सुन्दर भएको छ र गजलमा त्यसकाले कुराहरू उहाँको ट्राई गरिरहेको थियो हामी देख्न पाउँदछौँ। त्यसैले सर्वदलीय नेवार सरले पनि एउटा बाचा भन्ने खालको कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। सर्वमा अब कवितामा आदर्शवादी र आशावादी स्वर जुन चाहिँ हो त्यो प्रखर पाइएको छ। आफूदेखि अर्कै जीवनलाई पनि जुन चाहिँ सम्मान देखाउनु पर्ने जुन चाहिँ माया देखाउनु पर्ने जुन चाहिँ आदर देखाउनु पर्ने त्यो तपाईँहरूमा त्यो पनि भित्रियोस् भन्ने खालको आह्वान विनोद आचार्यज्यूको कवितामा छ। र अनुप शर्माले यहाँ गजल छन्दबद्ध यहाँ एउटा कविता प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँको जुन चाहिँ
सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसरी नै वन्दना देवी उहाँले आमा शीर्षक कविता यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र आमा